Okay, this is our poem number, I think it's chapter number 40. This is a very interesting poem in your textbook. You can open your books on page number 74. Okay, now let's start. This is a poem which is written by an Indian poet. The name of the poet is Padma Sachdev, and the name of the poem is Cart Driver. Cart Driver is the name of the poem. You can see this image on your phones. This is cart because you have seen the carts, local carts. So this is a cart, and this is the driver. One who drives the cart is called the cart driver. The poem, the subject of the poem is the cart driver. This is the cart, and this is the driver of this cart. The subject of the poem is the cart driver. So the poet Padma Sachdev, he wants to tell us something about the cart driver. Padma Sachdev, I will tell you first few things about Padma Sachdev. That Padma Sachdev jo thi, she was an Dogri poet, and this poem has been written in Dogri language. This poem has been written in Dogri language, and it is translated from Dogri to English by Dr. Karan Singh. Dr. Karan Singh has translated this poem from Dogri to this English language. So in front of you, this is the cart driver. Okay, now you can, yes, I will tell you something about the poem. This is the, you can see the Padma Sachdev. Padma Sachdev. She was born in 1940, and she is an Indian poet and novelist. First thing about the poet is that she is an Indian poet and novelist. First modern woman poet of the Dogri language. She is the first modern woman poet of the Dogri language. You have read the poems in English language, but in Dogri language, Padma Sachdev was the first modern woman poet. And he also writes in Hindi. That means he also writes the poems in Hindi. And the important one of the famous poems is Meri Kavita Mere Geet. And for this, she won the Sahitya Academy Award. She won the Sahitya Academy Award. And maybe you may be asked the question at the end of the session that what was the poem for which she has been awarded with Sahitya Academy Award in 1971. तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए उसको एक poem that was मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत. Okay, and she also received the Padma Shri Award. This Padma Shri Award is the India's fourth highest civilian award, and she was awarded this. She received this award in 2001. She received this award in 2001. And we have another, the Kabir Saman for Poetry for the year 2007. And again, she won an award for her poetry. So introduction here. The poem Cart Driver, written by Padma Sachdev and translated in English by Dr. Karan Singh, describes a mother's love and concerns for her children and the love she has for her own life. Okay, now you can see here the poem Cart Driver. It's the name of the poem. It's written by Padma Sachdev, I told you, and it has been translated from Dogri language into the English. And the person who translated it from Dogri into English was Dr. Karan Singh. What is described in the poem?
what has been told in the poem, that is mother's love and concern for her children. So I can say that there is a tussle between the two, between the mother's love and the love for her children. यहाँ पे जो पोइट है पद्मा सचदेव, वो यहाँ पे हमें बताना चाहती है कि माँ को अपने लिए जो प्यार होता है और उसको जो अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि दोनों जो है मदर्स लव फॉर हर सेल्फ एंड मदर्स लव फॉर चिल्ड्रन, ये दो होते हैं, अपने लिए भी मोहब्बत और अपने बच्चों के लिए भी मोहब्बत. कभी इसमें जो है ना, देयर इज इट हैज बीन शोन दैट देयर इज अ टसल बिटवीन द टू थिंग्स. अब किसका जो है ना हावी हो जाता है, मदर्स किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है, उसके बच्चे जो होते हैं वो भी डेंजर में होते हैं और वो खुद भी किस में होती है, डेंजर में होती है, किस ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है. तो यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस भी देखने को मिलते हैं. तो फिर हमें इसमें ये पढ़ना है कि मदर्स, अब यहाँ पे कौन सा लव जो है हावी हो जाता है. क्या मदर को अपने आप पे जो प्यार आता है, अपनी सेफ्टी पे वो ज्यादा फोकस करते हैं या बच्चों की सेफ्टी पे. सो here and he is concerned for her children and the love she has for her own. तो यहाँ पे कहा गया है उसको यहाँ पे जो उसको अपने लिए मोहब्बत है और जो उसको अपने बच्चों के लिए मोहब्बत है, उस कंसर्न को यहाँ पे दिखाया गया है. It also depicts the carelessness of the car driver. और इस पोएम में जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़नी है, that the carelessness of the car driver, यानी जो कार ड्राइवर होता है उसी की वजह से जो पूरा जंगल है वो मुसीबत में पड़ जाता है. माँ भी टेंशन में होती है और बच्चे उसके जो है ना जहाँ पे वो होते हैं वो उनके लिए फिक्रमंद होती है. लेकिन ये सब जो होता है ये कार ड्राइवर की वजह से होता है. दैट्स व्हाई दिस पोएम हैज बीन टाइटल्ड एज द कार ड्राइवर. दिस पोएम हैज बीन टाइटल्ड एज द कार ड्राइवर. तो अब हमें ये पढ़ना है कि थोड़ा स्टेंजा वाइज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. इससे पहले कि हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पढ़ें, आप अपनी किताब पे जो है पेज नंबर 74, अगेन मैं कहता हूँ 74 पे आप देख सकते हैं. तो वहाँ पे आपको जो है स्टेंजा दिया गया है. सबसे पहला स्टेंजा जो है आपकी स्क्रीन पर भी है और आप अपने बुक से भी ले सकते हैं. आई विल रीड द स्टेंजा फॉर यू. In the fearful silence of the forest, I hear the sounds of pause of a careful bulbul. Again, in the fearful silence of the forest, I hear the sound of pause of a careful bulbul out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its four little ones hungry in the nest. This is the first stanza of the poem. Again, I will read it. In the fearful silence of the forest, I hear the sound of pause of a careful bulbul. Out in the night, shaking the feathers on his head to find food for its four little ones hungry in the nest. So, explanation is before you. In these lines, the poet imagines a forest. So, it's not the actual situation, just the image during writing this poem. When the poet written this poem, she imagines that there is a forest, and forest is gripped by the fearful silence. एंड यू नो, जब आप जंगल में जाते हैं ना, वहां पे ज्यादा बस्ती तो नहीं होती है, लेकिन वहां पे एक साइलेंस सी रहती है, खामोशी सी, सुकूत जिसको हम बोलते हैं, बहुत जबरदस्त खामोशी. Where she happens to hear the sound of a careful bulbul's paw. This is, और वहां पे ये अपने आप को जस्ट आप एक चीज कीजिए, जैसे वो इमेजेस क्रिएट होते हैं ना किसी को, यानी आप अगर जिस वक्त हम पढ़ते हैं ना ये पोएम, जब कोई लाइन हम पढ़ते हैं
उस वक्त हमारे जहनों में एक इमेज आ जाती है किसी चीज की, जिस चीज का हम जिक्र उस लाइन में करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी आप अपनी आंखें बंद करके आप देख सकते हैं, एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, और वहां पे बिल्कुल साइलेंस है, लेकिन एक आवाज उसको आ रही है, एंड दैट साउंड ऑफ ए केयरफुल बुलबुल्स पाज। एंड यू नो, बुलबुल जो है, बुलबुल को आपने देखा होगा, उसके पास की जो है जो पंजों की है आवाज आती है। और बट आवाज कैसे आती है, यहाँ पे कहा गया है केयरफुल बुलबुल। In the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul. The bulbul had left in the night to search for food. बुलबुल, अब मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बुलबुल कहाँ गया था? He was in the forest. He had left. He had left her nest. उसने अपना नेस्ट जो है वो छोड़ा है। क्यों, कब छोड़ा है? In the night. Why? To search for food for her 4 little ones. That means the bulbul has 4 little babies in the nest, और उनके लिए फूड हासिल करने के लिए, ग़िज़ा हासिल करने के लिए वो फॉरेस्ट में गया है। That were hungry in the nest, and those 4 little ones were hungry in the nest. As mother, the bulbul could not bear to see her little ones hungry, because अपनी माँ जो होती है वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती है। Therefore, she had left to get food for her little ones. इसलिए जो बुलबुल है, she had left them there in the nest. क्यों? क्योंकि उनको उसको उन चारों के लिए जो है फूड लाना था। बट कहाँ पे गई थी? ये फॉरेस्ट में गई थी, और फॉरेस्ट में आपको पता ही है देयर वाज डीप साइलेंस, वहाँ पे बहुत खामोशी थी, और वहाँ पे पोएट क्या सुनती है, वो उस जो बुलबुल है उसके पास की साउंड सुनती है। और यहाँ पे भी एक इमेज क्रिएट हो जाती है जब हम पढ़ते हैं द साउंड ऑफ पॉज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल, यानी इश्वार और पकान, हाँ आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक कर कदम रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो है बुलबुल फूक फूक कर कदम रखता है। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेंजा।